Ladies and gentlemen, welcome to this beautiful program of the future of power in your most amazing and beautiful city. Thank you for having us. My name is Anthony Phillips. I'm going to introduce myself again a little bit later to tell you a little bit more about the program. But first, we're going to have a lovely cultural program. We're going to have 4 items, 1 song, and 3 dances. And the first song is by Triveni Kala Kendra. So please, big round of applause for Triveni Kala Kendra. यो जीवनको सार पाइँदैन मनुष्य यो चोला बारम्बार पाइँदैन मनुष्य यो चोला बारम्बार सार पाइँदैन मनुष्य यो चोला बारम्बार पाइँदैन मनुष्य यो चोला बारम्बार
In the dancing, well, the children are the future of power. They are so beautiful. Right? So now we have one more dance by B.K. Anju, and he will dance a Devi Durga classical dance. Antarvibhavaye Gauri Tantaka Jantarita Tatikita Tuntakatari Jantarita Tatikita Tuntantakajam Takatari Jam Tajam Tadikita Tum Akhilandeshwari Chamundeshwari Palayamam Gauri Paripalayamam Gauri Akhilandeshwari Chamundeshwari Palayamam Gauri Paripalayamam Gauri Tam Tadhim Takathimi Takachanu Takathimi Takachanu Tam Tadhim Takathimi Takachanu Takathimi Takachanu Tam Dhim Tum Nam Targadadum Shubhagatri Giriraja Putri Abhinetri Sharvardha Gatri Shubhagatri Giriraja Putri Abhinetri Sharvardha Gatri Sarvardha Sandhatri Jagadeka Janayitri Chandra Prabha Kirti Sarvardha Sandhatri Jagadeka Janayitri Chandra Prabha Kirti Chaturbahu Samrakshita Dikshita Chaturbhashantara Bhuvana Palini Kumkuma Raga Shobhini Kusuma Bana Samshodhini Mauna Suhadini Gana Vinodini Bhagavati Parvati Devi Akhilandeshwari Chamundeshwari Palayamam Gauri Paripalayamam Gauri Tathim Tatajam Takajam Targadum Tathim Tatajam Takajam Targadum Takathim Takatathim Takatathim Tajanutam Sri Hari Pranayambulasi Shri Pada Vichalita Kshiramburasi Sri Hari Pranayambulasi Shri Pada Vichalita Kshiramburasi Shri Pitha Samvardhini Dola Suramardhini Shri Pitha Samvardhini Dola Suramardhini Dhanalakshmi Dhanyalakshmi Dhairyalakshmi Vijayalakshmi Dhanalakshmi Dhanyalakshmi Dhairyalakshmi Vijayalakshmi Adilakshmi Vidyalakshmi Gajalakshmi Santanalakshmi Sakala Bhoga Saubhagyalakshmi Sri Mahalakshmi Devi Akhilandeshwari Chamundeshwari Palayamam Gauri Paripalayamam Gauri Takachanu Takachanu Takathimi To Induvadane Kundaradane Veena Pustakadharine Induvadane Kundaradane Veena Pustakadharine Shuka Shaunakadi Vyasa Valmiki Muni Jana Pujita Shubhacharane
शुक शौनकादि व्यास वाल्मीकि मुनिजन पूजित शुभ चरणे सरस साहित्य सरस संगीत स्तनयुगळे सरस साहित्य सरस संगीत स्तनयुगळे वरदे अक्षर रूपिणे शारदे देवी अखिलांडेश्वरी चामुण्डेश्वरी पालय मां गौरी परिपालय मां गौरी सिंहासनस्थायिने दुष्टपरब्रह्मक्रियाशालिने विष्णुप्रिये सर्वलोकप्रिये सर्वनामप्रिये धर्मसमरप्रिये हे ब्रह्मचारिणे दुष्कर्मवारिणे हे विलम्बितकेशपासिने मर्दनशीलमहित गर्जनलोल भयद नर्तन केलिके कालिके दुर्गमागम दुर्गमालिने दुर्गे Thank you, BK Andrew. Big round of applause. It's nice to know that good overcomes evil. Huh? So now the last one of our program for the cultural side is again the Tanahon Stars doing the dance Oh Krishna Hare. जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है प्यार में डूबी प्यार में खोही प्यार की धुन में जागी न सोही प्यार में डूबी प्यार में खोही प्यार की धुन में जागी न सोही दुनिया से है वो अनजानी सब कहते हैं प्रेम दीवानी किसना से मिलती है भूल के हर बंधन हो किसना की माला की जपती है वो जोगन
राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। जो है तेरा मदनों वाला, जिसकी दीवानी बिजली हर वाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा। Ladies and gentlemen, the Tanahun Stars. So we hope you have enjoyed our small program, and I would now like to begin the main part of our program, the reason why you're here. First, I'd like to introduce myself. My name is Anthony Felix. I come, as you may have guessed, from the United Kingdom. I live in a place called Oxford, and it is my great, great, great pleasure and privilege to be here tonight with you as your Master of Ceremonies. Now, I'd like to take this small opportunity to just give you a little bit of context about what's going to happen tonight. And first of all, the whole reason why you're here is so that we can inform you. This morning, there was a very, very interesting, dynamic, deep, and really quite beautiful meeting amongst more than 50 of your leaders here in your community, in your region. Later tonight, you're going to hear about how these people were picked to be amongst us. We had a very, very interesting conversation. And tonight, we want to be able to share a little bit about what went on. Tonight, you're going to be meeting a number of personalities, and we hope that by the end of it, you will be able to say that you fully understand what it is that is the future of power, and why it is that it's so important for Nepal, and why it is that we are so happy to be here doing such a program in your beautiful, beautiful, beautiful city, town, whatever you call, of Pokhara. I don't think I've ever been in such a beautiful place. So now, let's get started. One thing I'd like to draw to your attention, if you look at our backdrop here, the name, the future of power, is quite clearly there, but underneath you can see the logo of the Brahma Kumaris. This is an initiative of the Brahma Kumaris. This is something that the Brahma Kumaris have now been doing in 35 cities, and we hope to bring this to the whole world. To give a warm welcome to you all from the Brahma Kumaris, Rajyogini B.K. Surendra Didi has come. She is the coordinator for the western part of Nepal and for Benares. So I'd now like to ask Sister Rajyogini Surendra Didi to come onto the stage and give your warm, warm welcome. Surendra Didi. ओम शांति। आज मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आज हम सभी नेपाल की
प्राकृतिक सुंदरता से धनी पोखरा नगरी में बैठी, और वो भी इसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे भ्राता निजात जी अपनी टीम सहित आपको फ्यूचर ऑफ पावर के बहुत बहुत अमूल्य खजाने देने के लिए आए हैं, जिनमें अनेक शक्तियां भरी हुई हैं। जिन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आप सबको वो बहुत अच्छे टिप्स बताएंगे, आपको युक्तियां बताएंगी कि किस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने भ्राता निजात जी को उनकी टीम सहित बहुत बहुत आपका मैं दिल से हृदय से स्वागत करती हूँ। उसके साथ साथ हमारी सभा में पधारे हुए पोखरा निवासी सभी भाई बहनों का भी मैं दिल से हृदय से स्वागत करती हूँ एक रिक्वेस्ट के साथ कि आपको जो भी ये प्रोग्राम में आपको कुछ लौटाना चाहते हैं खजाने, उनको आप बहुत ध्यान से, प्रेम से, जितनी श्रद्धा से ये आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, आप भी उतनी श्रद्धा से, प्रेम से उनको सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि यही अमूल्य मौका है, समय है, जिसमें आप अपने जीवन को महान बनाने के लिए बहुत सारी बातें आप सुनेंगे, सीखेंगे। मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप अवश्य ध्यान से सुनते हुए उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इसके साथ साथ अभी हमारे सबके बीच में हमारे भाई जी ने जो अपनी टीम सहित बहुत अच्छा भजन, प्रेरणाएं देने वाला गाया, उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। उसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो हमारे बच्चे यहाँ आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम डांस का दिए, उनको भी मैं बहुत दिल से, प्यार से, दुआओं सहित उनका स्वागत करती हूँ। ओम शांति। So now I said that the Brahma Kumaris were very much involved with this program, and I'm about to invite someone up who has been with the Brahma Kumaris for over 35 years. She is a sister from Australia, and you'll notice that she looks like a Brahma Kumari, she's wearing a white sari, and she has dedicated her life for all that time as a Raj Yogi. But she's been a Raj Yogi not only in Australia, but in many countries, especially in Southeast Asia. And so she has a great deal of experience in bringing spirituality to all kinds of people from all walks of life. She has been working with the Future of Power for the last 3 years and is primarily responsible for gathering together all our guests through all the cities that we go to. So probably there's no one who knows more about how the Brahma Kumaris and how Future of Power fit together. So now please give a warm round of applause as a welcome to Sister Maureen. So yes, my role is to introduce the connection between especially the Brahma Kumaris and this topic of power, because sometimes people have a different idea about power. But of course what we're talking about today, actually I can see you're all straining your necks, so I'm going to go up here. I'm not as tall as Anthony. So yeah, this is about inner power, and the fact that inner power can actually be more powerful
than that outer power. So the Brahma Kumaris is an organization that is founded in spirituality. Not so much religion, but spirituality. And so you'll find that people all over the world, from different walks of life, from different religions, are very comfortable with this practice. And it's based on the very ancient teachings of Raj Yoga, which is the connection between the Atma and Param Atma. So what we are doing within the Brahma Kumaris is understanding what is Atma. Because many people say we are a soul. But what is the soul? How can I bring that soul power really into my life? And how can I connect with the Supreme Soul so that I can draw on that immense power so that I can really make my life easy, fruitful, and happy. And so now the Brahma Kumaris have spread in over 135 countries. And it is practiced by people from all different professions. So this morning we had people from, I think, about 20 different fields, and we call them in the Brahma Kumaris wings. So they include education, science, medicine. And within these different wings, professional people who are benefiting in their professional life, in their family life, in their personal life, have developed a lot of different programs that are being offered in professional organizations all over the world, including the Values in Healthcare program, Values in Spirituality, the Living Values Education program, but also in the media, in agriculture, in science, in engineering. We have a very big environmental wing. And so in all these different areas, we're offering from this big toolbox that we've developed these programs, which I'm sure you know. Anything done by the Brahma Kumaris is always free of cost. And so we have a lot to offer. And one of the programs is this program, The Future of Power. So this morning we brought together people from all these different professions. And so later on this evening you'll also get a little taste of the meditation that's practiced, because this is really the foundation of what we do. We practice meditation, going inside, learning about myself, cleaning up anything that I need to clean up, and also yoga, connecting with that higher power. And so I'm sure tonight you'll get a little taste of all of these things through this program. So it's very, very nice. As Anthony said, I think this is one of the most beautiful places I've ever visited, and we're enjoying being in this city. So thank you for having us here. So now, ladies and gentlemen, it's great because we're now going to really start this extremely important program with something so beautiful, the lamp lighting ceremony. And we have a number of our honored special guests here, and I'm going to call out your names. As I do, I invite you to come onto the stage and just be very careful that you don't fall off. And first is Mr. Vishwambar Prasad, Mr. Nizar Juma, Rajyogini Surendra Didi, Maureen Chen, Divyakala Shrestha, Mr. Anand Raj, DK Kamla Didi, Dr. Sarah Iga, Mr. Arnold Dessa, Mr. Lok Darshan Regmi, Dipender Baiji, Mr. Barry, Ms. Rosemary, Ms. Gudrun Wu, Durga Didi, Sarah Fitzgerald, François Bechet, BK Shailesh, and BK Paranita Didi, please. And so I think we're just about fixing up the stage. And so
Come, just watch out. Okay, let's now begin. ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ विश्व शांति की ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ विश्व शांति की ज्योत जगाओ इस धरती के अशांति का अंधकार So I'm noticing that I think it's our blessing actually that this hall is not big enough. And so for all of you who are standing at the back, a special warm welcome to you. I'm sorry we don't have the seating for you, but you're most welcome and we're so happy that you can be here. Now this Future of Power program has been in now, with Pokhara, 35 cities. And we are extremely happy to be here tonight because you are very much part of our expansion into the international world. But this program started quite a few years ago in 2009. And tonight, it's my very great pleasure to introduce to you the person who was originally inspired to put this program together. But not only was he inspired to create it, but he has had the energy and the fortitude to drive it through over these past many years. So now it has become the great success that we see today. Now this man is no ordinary man. He is not Nepali, he is not Indian, he's Kenyan. He was born in Uganda, he lives in Kenya, he is a Muslim. He is very closely associated with the Aga Khan Development Foundation, but he is also an extremely busy and important businessman. In fact, I can tell you that he is chairman of the board of 54 companies. So he is an extremely busy man. He is a man with huge vision. And he is a man who 20 years ago, actually a little more than 20 years ago now, discovered the power and the relevance of spirituality, and he's applied it to his own life. And the result of that is the creation of the Future of Power, which is really his gift to the world. So now it gives me great pleasure to introduce to you a man with a huge golden heart, the most generous man I know, Mr. Nizar Juma. Mr. Nizar Juma. Thank you, Anthony, ladies and gentlemen. Anthony introduces everybody, thanks everybody, and it's my pleasure to introduce him properly. Anthony Phillips, as his full name is, comes from Oxford, as is already said, but he is an advisor, strategic advisor to large corporations like Nestle. Some of you will have heard the name Nestle. So it's corporations like that he advises. And he is here entirely at his own cost, specially to attend these programs that he is attending today and yesterday. And I am very happy to introduce him. I want to thank him because he's doing this entirely free of cost. Otherwise, I can tell you, he would be very. So, warm welcome to him. मैं हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में? हिंदी में बोलूं, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है,
आप थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ जाएगा, फिर भी इसी में बोलूं। ओके, मेरा आज काम ये है कि आपको फ्यूचर ऑफ पावर क्या है उनके बारे में थोड़ा बताऊं। शॉर्ट फ्यूचर ऑफ पावर, ये सारा सब कॉन्टिनेंट है, ये कंट्रीज हैं और सारी सब कॉन्टिनेंट इसके अराउंड जो कंट्रीज हैं, इनके लिए ये स्पेशली फ्यूचर ऑफ पावर। क्यों कि फ्यूचर सारा विश्व का यहां है। आप शायद मालूम नहीं होगा कि 2500 साल के तक विश्व का पावर इधर था, ये सब कॉन्टिनेंट में था। तब ये पावर को हम सॉफ्ट पावर कहते थे। क्यों कि हमारे जो रूलर्स थे वो बेनेवलेंट रूलर्स थे, उनको उनकी प्रजा के ऊपर प्यार था, वो प्यार से रूल करते थे। और इनको तब कोई भी इलेक्शनरी, टेलीविजन, ब्राइबरी, करप्शन, ये सब कुछ नहीं था। तो इन लिए इनको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। 2500 साल के बाद ये पावर इधर से दूसरी कंट्रीज में गया, इधर से बहुत कंट्रीज में गया। फॉर एग्जाम्पल, इधर से इजिप्ट, चाइना, ग्रीस, रोम, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, और अभी ये पावर अमेरिका में। लेकिन ये जब पावर इधर से निकल के दूसरी कंट्री में है, तब ये पावर का जो नेचर था वो बदलने लगा और ये पावर हार्ड बनने लगा। तो आज ये पावर जो अमेरिका में है, उनका डेफिनेशन ये है कि हमारे पास कितने बॉम्ब है, कितनी मिसाइल है, कितनी बंदूकों है और कितना पैसा है। इनको अभी हम हार्ड पावर कहते हैं। ये सॉफ्ट पावर अभी हार्ड पावर नहीं है। 2007 से हम देख रहे हैं कि ये पावर वापस बदलने का शुरू हुआ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल मेल्टडाउन शुरू हुआ, उधर बहुत बड़ा रिसेशन हुआ और ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप में अभी इनका डेट बहुत बढ़ गया है और वो अभी कितनी कंट्रीज इसमें से तो दिवाला के क्लोज में। बात ये है कि अमेरिका में भी अभी उनका जो जीडीपी है इसका 212% उनका कर्जा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं 2007 से कि ये इनको हम मिटा दें, लेकिन मिट नहीं रहा। क्यों कि ये पावर वापस बदलने का शुरू और ये पावर वापस इधर सब कॉन्टिनेंट में आ रहा है। ये शुरू हो गया है बहुत साल से। अभी हम चीन हो उनका क्लियरली देख रहे हैं। अभी ये पावर वेस्टर्न यूरोप में हो कि इधर हो, इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता है कि उधर से निकल के इधर आए तो इसमें हम खुश हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये एक फैक्ट है कि हो रहा। अभी क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि ये पावर को हम भी कैसे चलाएंगे। उनको हार्ड पावर से चलाएंगे, मतलब कि हम बंदूक लेके बैठ जाएंगे, कि हम इनको सॉफ्ट पावर में वापस कन्वर्ट कर लें। सॉफ्ट पावर का मीनिंग ये होता है कि हम इनको वापस जैसे पहले था ऐसे इनको वापस बनाए। मतलब कि अभी भी इतना 2500 साल के बाद भी अभी आप देखते हो कि यहां कितना स्पिरिचुअलिटी का बेस है। अभी भी इधर आप देखो, इधर बांग्लादेश में, इंडिया में, ये सब कंट्रीज में जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बेस है वो किसी और दुनिया की कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेस है, स्पिरिचुअलिटी हमारी बेस है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें ये पावर को सॉफ्ट पावर,
लेकिन सॉफ्ट पावर बनाने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सॉफ्ट हो जाए, कि हम वीक बन जाए, कि हम सबमिसिव बन जाए। इनका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि हम हार्ड पावर को सॉफ्ट पावर के साथ मिलाएं, तो इनको हम स्मार्ट पावर हमें बनाए। लेकिन ये देश में आए, उनकी पहले हमको एक एक इंडिविजुअल को ये पावर अडॉप्ट करना सॉफ्ट। इसका मतलब ये है कि हम हमारे डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को छुड़ाएं। ये रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, रिलीजन अलग है। रिलीजन का मतलब ये है कि हमें इतना जन्म से हमको कहा गया है कि ये आपका रिलीजन है, ये बेस्ट में बेस्ट है, आपको ये फॉलो करना है, और अदर रिलीजन इससे पूरा हल्का है। तो ये रिलीजन की बात अलग है, हम इनको मिक्स नहीं करते स्पिरिचुअलिटी के साथ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होते हैं कि हम एक एक स्पिरिट है। स्पिरिट माना आत्मा। मोरिन दीदी ने हमको बताया कि आत्मा और परम आत्मा को जोड़ना ये पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिट माना आत्मा, उनका जो भी हम स्टडी करते हैं, उनका जो भी हम करते हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हम एक एक स्पिरिट है, आत्मा है, हमारा एक बाप है, वो भगवान है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब भाई बहन। तो इसमें कोई जुदाई नहीं आती है कि मेरा क्या रिलीजन है, कि आपका क्या रिलीजन है। स्पिरिचुअलिटी में कोई नहीं देखते। इधर भी आप देखो, जो भी हमारा गेस्ट इधर है, दुनिया में किधर भी आप जाके देखो कि जो हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो इसमें सब जुड़ जाते हैं। आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट, कोई भी, सब मिल जाते। तो ये सबको इकट्ठा करके हम एक बनाना है, और स्पिरिचुअलिटी का हमारे लाइफ में एडिशन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो मैं डिसाइड करूं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे ईगो कम करना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे सच्चाई से काम करना है, मुझे इंटेग्रिटी मेरी लाइफ में लाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्पिरिचुअलिटी का मेरी लाइफ में जुड़ता हूं, उसका कनेक्शन। तो ये हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। इसका स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे किधर कोई भी जगह में जाना है जिधर स्पेशली मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर सकूं, मुझे कोई गुरु चाहिए, मुझे कोई सिस्टम्स चाहिए, ये नहीं है। मैं किधर भी ये कर सकता हूं। मैं मेरे डेस्क के ऊपर काम करता हूं, उधर मैं घर में काम करता हूं, मैं बोर्ड रूम में बैठा हूं, किधर भी मैं स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में। तो ये हार्ड नहीं है ना, ये डिफिकल्ट है। मुझे सुनना है हाँ के ना, डिफिकल्ट है नहीं। तो ये कैसे हम कर सकते, क्योंकि जब ये मेरी लाइफ में मिलाऊंगा तो मेरी फैमिली मिलाऊंगा, तो ये फैमिली से मेरा जो कनेक्शन में है उसमें ये स्प्रेड है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें ये लाना है। क्यों कि ये हमारे लिए अच्छा है, हमको अच्छा फीलिंग होता है कि ऐसी कोई भी चीज नईता हम हमारी लाइफ में लाते हैं, तो ये हमें अच्छा लगता है कि हमने कुछ नया शुरू किया। तो इसलिए कोई भी नईता हमें अच्छी लगती है, और ये गुडनेस है, क्योंकि इसमें कोई बुरा नहीं है, इसमें सब कुछ जो भी है वो अच्छा है। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं कि फ्यूचर ऑफ पावर, इनका रियल मतलब क्या है, कि रियल पावर क्या है। आज आप आपकी लाइफ देखो कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लाइफ के ऊपर कितना डिमांड है, आपकी खुद की फैमिली का है, चलो वो तो हम बोलो हाँ वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपका काम का देखो, आपका बिजनेस का देखो, आपका बॉस का देखो, इंस्टीट्यूशन का देखो, सारा जो वर्ल्ड का जो परिवार,
उनको देखो कि डिफिकल्टी जिधर भी देखो हो, तो इनका हम सामना कैसा करें? इनका सामना ऐसा कर सकते हैं हम कि हम इंटरनली पावरफुल बने, हमारी शक्ति बढ़ाए। तो ये शक्ति हम कैसा बढ़ा सकते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी को। आप ये भी शायद सोचेंगे कि ये मैं क्यों आपको कह रहा हूं, क्योंकि 22 साल की पहले मैं भी स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजन का कभी नहीं समझा। मुझे ऐसा लगता था कि ये सब स्पिरिचुअलिटी की बात करनी ये एक वीकनेस है, ये नबड़ाई है। आज भी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब रिलीजन की बात है ना, ये बूढ़े लोग के लिए है और बहनों के लिए, मर्द लोग के लिए नहीं है, ऐसा तो कहते हैं ना, ये रियल मर्द के लोग। तो मुझे भी ऐसा लगता था तब कि ये हमारे लिए नहीं। लोग कहेंगे कि आप सीरियस इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आप ऐसा स्पिरिचुअलिटी की बात क्यों करते हो, क्योंकि ये एक वीकनेस है। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने ये मेरी लाइफ में अडॉप्ट किया तो ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। ये इससे जो मैंने इतना, जिसमें से मैंने पावर लिया कि 22 साल पहले मैं 8-10 कप नहीं चलाता था, अभी मैं 54 कप नहीं चलाता। और उसके बाद भी मेरे पास टाइम है कि मैं इधर आके आपके साथ ये फ्यूचर ऑफ पावर की भी बात। मैं जब 4 बजे सोने जाता था, अभी मैं 4 बजे सुबह उठता हूं, क्योंकि ये टाइम में हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो सारी लाइफ में मैं चेंज लाया। कोई मेरे सामने ये बंदूक लेके नहीं खड़े, मैंने खुद किया है, मेरे ओन डिसीजन से ये किया है, क्योंकि इसमें से जो मैंने प्राप्ति किया वो इतनी प्राप्ति है कि इससे मेरा गुस्सा चला गया, मेरा स्ट्रेस चला गया, मैं आज क्लियरली काम कर सकता हूं, मैं पावरफुल हूं। विधि ये ईगो की बात नहीं है, ये क्योंकि इसमें से जो बेनिफिट मुझे हो, वो बेनिफिट मुझे मालूम है कि आप ईच वन को ये हो सकता है और ये आपको बेनिफिट लेना है। क्योंकि भारत के फ्यूचर में, ये सारे सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर में मैं बिलीव करता हूं कि ये आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये पावर इधर आप चाहो या नहीं चाहो, ये आना वाले है, आना वाले। अभी ये क्वालिटी ऑफ द पावर कैसा करना है वो आपके ऊपर है। और जब तक आप खुद में ये चेंज नहीं लाएंगे, तब तक ये देश में चेंज नहीं आएगा, फैमिली में चेंज नहीं आएगा। तो ये चेंज लाना मुश्किल नहीं है, इजी है और ये सहज है। तो ये कैसा करना, उनका स्टेप बाय स्टेप भी हम कर सकते हैं। और ये डिसीजन आपको आज लेना है, कल नहीं। बहुत दफा हम कुछ सोचते हैं, हाँ ये अच्छा कह रहा था, लेकिन हम सोचेंगे बाद में बात करेंगे। इस मीन्स के ये चला गया, इसके बाद नहीं पड़ेगा। आपको ये आज ही सोचना है, आज डिसाइड करना है जो आपको अच्छा लगे। और जो आपको ये करना है, तो मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि ये केक कैसे आपके लाइफ में आप ला सकते हैं। करना है ये मैंने तो 2-3 जगह सुना, करना है कि नहीं सबको? अच्छा, तो मैं ये टॉक शो के बाद आपके सामने वापस आऊंगा। मैं आपको 20 मिनट्स में स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा कि आप आज, कल नहीं, आज शाम को, आज शाम से आप क्या क्या कैसे अडॉप्ट कर सकते हो कि आप भी कह सको कि मैं स्पिरिचुअल हूं, है ना। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो वीक नहीं होते। हम महात्मा गांधी स्पिरिचुअल था, नेल्सन मंडेला स्पिरिचुअल था, ये हमारी मदर टेरेसा, ये स्पिरिचुअल लोग हैं।
ये लोग ने स्पिरिचुअलिटी का अडॉप्ट किया, वो वीक था, महात्मा गांधी कोई वीक था, बहुत पावर वाला था। ये पावर आता है हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं होता है वीकनेस, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, शक्ति। और ये जितनी भी आपको चाहिए इतनी आप अडॉप्ट कर सकते हो, आप एक ओके। तो आप हमने डील किया है आपके साथ, वादा किया कि मैं आऊंगा 20 मिनट में, आप जो कन्विंस हो जाओ तो अडॉप्ट करना, नहीं तो फिर मुझे बोल देना नहीं आती है। ओके? Thank you very much, Juman. So now, ladies and gentlemen, we come to that point of our program where we're going to be inviting some of the guests that we had this morning to share their experiences with you, so that you can just get a bit more of an idea of what we've been doing. So, if I could invite our guests now onto the stage. So, Mr. Yakala Shrestha, please, to come onto the stage, Mr. Arnold Dessa, and Mr. Ananda Raj. So, thank you very much for agreeing to be part of this talk show. And I hope I don't ask you too many difficult questions. This is relaxed. We've just got to share with them what it is that we did this morning. So, let's start by I go to each one of you, and if I could just ask you, could you just share what your experience of this morning was, and some of the bigger insights that you got from your experience this morning. So, let's start with you, Divyakala Shrestha. वास्तवमा हामीले जति नै नलेजेबल भए पनि, जति नै काम गरे पनि, सबभन्दा पहिले हाम्रो आत्मा चाहिँ परमात्मासँग जोडिनु पर्ने रहेछ र हामीले ठुलो मान्छे हुनुभन्दा असल मान्छे हुनुपर्छ। जुन असल मान्छे हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एप्रोच, मेडिटेसनको एप्रोचबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा असल कामहरू गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्यो। Okay, so meditation helps us to become a better human being. Yeah. So hopefully, a little bit later on this evening, we'll have an opportunity to try some meditation for ourselves. So, Mr. Ananda Raj, let me ask you, what were your overall impressions and what was your experience this morning? Thank you, Anthony. Would you permit me speaking Nepali or? Nepali is great, yeah. You would prefer Nepali, yeah? With you apology from my all the friends. म नेपालीमा के भनौँ? आज बिहान हामी 45 जना विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूको उपस्थिति थियो। संक्षेपमा यसका प्रयोजन भनेको द फ्युचर अफ पावर। निजार जुमा जो उगान्डा, केन्याबाट यही अवधारणालाई अगाडि बढाउनको लागि सारा विश्वमा भ्रमण गरिरहेको छ र भारतका 30 वटा शहरमा पनि फ्युचर अफ पावरलाई अलिकति त्यो यसको बेसिक कन्सेप्ट, यसले हामीलाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि पहिलोपटक हामी गरिरहेका थियौँ र हामी सहभागी हुने सौभाग्य प्राप्त भयो। हाम्रा आफ्ना विचारहरू, हामीले भोगेका कुराहरू र हाम्रा अनुभवका कुरालाई हामीले एकअर्कासँग सेयर गर्यौँ र संक्षेपमा यति मात्र म तपाईहरुसँग निवेदन गरौँ कि शक्ति, हामीसँग जुन पावरलाई हामी नेपालीमा शक्तिको रूपमा परिणत गरौँ र त्यो शक्ति भनेको हामी आफै भित्र छ। हामी मानिसहरू यदि क्षमतावान छौँ, यदि सङ्घर्षशील छौँ, यदि हामी सक्षमता छौँ कि हामी आफैले आफैलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ र देशलाई त्यो परिवर्तनको लागि सङ्घार पुर्याउन सक्छौँ। त्यसैले त्यो क्षमताको विकासलाई आफैले, त्यो शक्ति भनेको बन्दुकको गोला मात्र होइनन् वा मिसाइल मात्र होइनन्, कि हामी भित्रको त्यो सक्षमतालाई हामी समाजमा पुर्याउन सक्यौँ भने, हाम्रा सक्षमता र हाम्रा सोचलाई
सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ हामी सबै पार्टिसिपेन्ट एउटा मलाई लाग्छ हामी झन्डै झन्डै 12-13 ग्रुपमा विभाजित थियौँ सबैको मकसद त्यही नै थियो त्यसैले हामी बिचका यो मानवीय सृष्टि भनेको संसारको सबभन्दा अत्युत्तम सृष्टि हो योभन्दा अरू केही पनि हुन सक्दैन तर त्यही मानिस आज विश्वको लागि नष्ट गर्ने शक्तिको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गरेको छ संहार गर्ने रूपमा पनि यसलाई स्थापित गरेको छ होइन यसको चमत्कारी विकासको लागि पनि त्यो मानिसले आफूलाई स्थापित गरेको छ त्यसैले यो मानिसको त्यो सकारात्मक पक्षलाई हामीले अगाडि लान सक्यो भने अघि एन्टोनीले बिहान पनि भनेको थियो निजार्जुमाले भनिरहेको छ कि 2500 वर्ष जुन हामीको सभ्यता थियो जुन हाम्रा सोचहरू थिए ती क्रमशः हामीले पश्चिमैतर्फ हामीले पठाउने गऱ्यौँ उनीहरूले त्यसलाई ग्रहण गर्दै गए र आज विश्वको परिवेश हेर्दाखेरि पनि पूर्वीय शक्तिमा अब क्रमशः जसले यो उत्पादन गरेको थियो जसले पहिला गरेको थियो क्रमशः अब फर्किने स्थितिमा छ त्यसैले भोलिको दिनमा यो सब कन्टिनेन्ट यो हाम्रो अन्तर्देशीय ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो शक्तिको महत्त्वपूर्ण प्रादुर्भाव हुन्छ भन्ने कुरोको कल्पना हामी गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि हामी पूर्वीय सभ्यता पूर्वीय संस्कृति र हाम्रो आत्मासँगको नजिक गर्ने जुन किसिमका प्रविधि छ र हामीले आत्मालाई चिन्ने प्रविधितर्फ जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसैले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा हामी स्थापित गर्न सक्छौँ त्यसैले यो सब कन्टिनेन्ट हाम्रो फ्युचर अफ पावर हो भन्ने कुरोमा कुनै विकल्प छैन त्यसो भन्दा भने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले के ग्रहण गरेका छौँ भन्दाखेरि हामी सबैको हामीसँग भएको इन्टिग्रिटी र हामीसँगको भ्याल्युज नै हाम्रो पावरको एउटा सोर्स हो त्यसैले हामी मानिसहरूले हाम्रो इन्टिग्रिटी हाम्रो क्षेत्र र हाम्रो भ्याल्युजलाई कहिले पनि अन्त नगरौँ र समाजको लागि यो उपयोगी सिद्ध गर्ने वातावरणतर्फ हामी लागौँ Thank you very much. So what I understood from what you said was that really real power is power within. And the real task is to rediscover and feed and nurture that power within. And then automatically society will change. So this is rather simple, rather small, but rather large and important. So may I now turn to you, Dr. Arnold Dessler. Could I just ask you to share your general experience and your insights from this morning's program? Would you like me to speak in Yes, I'd like you to speak in Hindi. No, in Nepali. In Nepali. It's very... Om Shanti. Om Shanti. Namaste. Hi, everybody. It's very interesting to sit on the stage with colleagues like Divya and Ananda and try and pick up the vibration of what it is they're saying. And I'm hoping that what I'll say will follow on from what they're saying. I'm not sure whether it will. I found this morning fascinating. I've been involved in these processes a few times before, and each time something new comes up, and some new revelation. Am I speaking too quickly? No. Okay. And I wonder if I can refer specifically to one part of the morning. Yes, please do, yeah. Because remember, the reason we're here is so that they know what we did. Okay. The structure of the morning was built around 4 questions being put to tables of contributors, of participants. And we had to discuss the questions among us. And the first question was, what was the most empowering thing that ever happened to you? And in our group, they all shared their stories. And it's very interesting, while I was listening to them, tracing the stories through from childhood. The stories came from childhood, from home life, school, and from relationships. And these stories were about the thing that empowered people, were incidents in their lives that humiliated them. In other words, when we talk about what empowered you most, you would tend to think, oh, well, this is going to be a marvelous story. But around our table and other tables that I've sat in on,
people talk about adversity, and it's as if it's the first challenge they have in their life. And the challenge is of so you haven't heard anything that I've said. Think of it, Arnold, as adversity. Yes, so their stories all depended on an adverse event happening in their lives. And they have to do with money or the lack of money, the suddenly being made to be very responsible before they were able to do so. And there were also stories about relationships that ended unsuccessfully, relationships that broke up. So that was very interesting, just as, to shift the way we think about things. How the most important event in our lives that can affect the way we think afterwards as adults are very, very difficult things. Now, another question that you asked, Anthony, was about what quality we had. That made you successful. The quality that made us most successful. And we changed tables, we changed partners. So we were talking to a new group of people. And it was very interesting to hear what happened then with our table. There was one man, the other man in the audience with also a white beard, and he didn't understand any English at all. So he spoke Nepalese to his colleagues, and I was trying to understand what was going on. And the conclusions I came to at the end of the time we had together was that all of us had in common that the most important quality we possessed was the one of being connected, of being able to connect to people and allowing ourselves to be connected to. And as I was explaining my experiences of being connected, my white-bearded colleague, Hanif Mile, I don't know whether he's here now, turned to me and said in English, "I understand exactly what you're talking about." So we thought, we translate, we try and make meaning through all sorts of things. We try and understand, we try and make meaning, and we also try and understand from the heart. And it was very interesting around that table about the power of understanding from the heart. So whether I speak Nepalese or Hindi or English or French, I hope it doesn't make that much of a difference to you, and that you're picking up some of the vibration, some of the feeling that occurred this morning when we were talking about the future of power. Yeah, thank you very much, Arnold. Well said. So let me just turn back to you, Dibyakala. You are an extremely well-educated person. I have your short resume here. You've been educated all over the world, and you have dedicated your life to education. That means that you have dedicated your life to the youth of the world, to the young ones. One of the subjects of our conversation this morning was about how important the youth are. So now I'd like to ask you to share your thinking about what we can do to encourage the youth of your nation, the youth of all nations, to consider and begin to experiment and experience the power of what we're talking about, the power of spirituality. वास्तवमा हामी भित्र नै असल सकारात्मक पक्ष पनि हामी भित्र नै हुन्छ र नकारात्मक पक्ष पनि केही हामी भित्र हुन्छ। जब हामी सकारात्मक पक्ष चाहिँ धेरै भएर नकारात्मक पक्षलाई जित्न सक्छौं हामी असल मान्छे हुन्छौं। जब हामीलाई नकारात्मक पक्षले हामीलाई जित्छ, यो भित्र रहेको नकारात्मक पक्षले हामीलाई जित्यो भने हामी खराब मान्छे हुन्छौं। यो सकारात्मक पक्षलाई जिताउनको लागि र असल मान्छे हुनको लागि हामीले चाहिँ पहिलो स्टेप चाहिँ मेडिटेसनबाट हामी पुल भएर अनेस्टीहरु डेभलप गर्न सक्छौं, डेडिकेसन डेभलप गर्न सक्छौं, कन्फिडेन्स डेभलप गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लागेको छ। र एउटा एजुकेसन क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले पनि मलाई यो आज बिहानको सेसनबाट कस्तो फिल भइरहेको छ भने हामीले मात्रै यति अडियन्सले मात्रै यो कुरा चाहिँ रियलाइज गरेर सिकेर पुग्दैन, किनभने हाम्रो फ्युचर पावर्स
हाम्रो फ्युचर अफ द पावर त हाम्रा बालबच्चाहरू हुन्। हाम्रो बालबच्चाहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू, तिनीहरू चाहिँ भविष्यमा गएर देश निर्माण गर्ने चाहिँ गहनाहरू हुन्। तिनीहरू नै कर्णधार हुन्। त्यसकारण चाहिँ यो यस्तो राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो स्कुलहरूमा हाम्रो बच्चाहरू समक्ष कसरी पुर्याउने होला भन्ने मलाई चाहिँ एकदम थिङ्किङ आएको छ। र मलाई कस्तो लागिरहेछ भने यसलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाले हामीले चाहिँ हाम्रो करिकुलममा हाम्रो टेक्स्ट बुकहरूमा पनि इन्कर्पोरेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसपछि हामी यो कुरालाई बिस्तारै लगेर त्यसपछि यसलाई मासमा चाहिँ हामी लग्न सक्छौँ होला मलाई जस्तो मलाई लागेको छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। Okay, thank you very much for those thoughts. So let me now turn again. You are the former president of the Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry and the chairman of Transparency International Nepal. So you are a businessman. You're an eminent industrialist and I think a very well-known personality in this region. You are clearly a successful and very practical man. But you also clearly have applied your talents to this whole area of governance and this interaction between civil society, business, and just the way things are done. So I'm sure you've got a lot of ideas about the practical application of spirituality in your life and possibly in the lives of others. And I'd like to give you the chance to share your thinking about the relevance and practicality. What do you understand and how do you use and how would you advise the people around you to use these ideas in a practical way? Thank you, Anthony. This is a very difficult and tough question for me. Actually, the spirituality is the very, personally for me, is the learning process. I was so many times called by Saileshji to join the mediation in the Brahma Kumari Pokhara. But I'm sorry to say that I could not realize and visualize that what is the power behind this spirituality. I could not realize till now, till today. But I'm learning process that since the morning to night, I'm feeling as Anthony has expressed very quietly and Mr. Najir also has a. Now it has my mind is a little bit more feeling the aggression that you should learn about this. Now time has come. Now you should devote for that. मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि ब्रह्मकुमारीका शैलेन्द्र लगाएर साथीहरूले धेरै पटक आग्रह गर्नुभएको थियो कमसेकम पोखराको यो अफिसमा आएर छलफलमा भाग लिनुहोस् भन्छ मलाई थाहा थिएन ब्रह्मकुमारी आफै धर्म हो र ब्रह्मकुमारी आफै एउटा फिलोसफी हो त्यो बारेमा केही पनि ज्ञान नभएर म आफै स्वयं अभिज्ञ थिएँ र मैले त्यसबाट प्राप्त हुने शिक्षा ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा आजको दिनसम्म पुगेको छैन र बिहानदेखि आजसम्मको छलफलमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण के आएको छ भन्दाखेरि यो आध्यात्मिक भनेको धर्म होइन रहेछ आध्यात्मिक हरेक धर्ममा हुनै पर्ने महत्त्वपूर्ण अंश रहेछ भन्ने कुरो आज बिहानदेखिको बसाइमा अलिकति अनुभूति भएको छ फिलिङ भएको छ त्यसैले यो कुनै धर्मसँग सम्बन्धित नभइकन आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखारपन ल्याउनको लागि आफ्नो व्यक्तित्वलाई समाजप्रति समर्पित गर्नको लागि र हामी समाजलाई के गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले प्रेरित गर्नको लागि एउटा चाहिने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कि भन्ने चाहिँ फिल भइरहेछ र म प्रयास व्यक्तिगत रूपमा म प्रयास कहाँनिर गर्ने सक्ने अवस्थामा छु भन्दाखेरि यसलाई बुझौँ र यसलाई ग्रहण गरौँ र आफूले सिकेका कुराहरू अनि समाजमा रहेका अरूलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता हामीमा विकास होस् भन्ने मैले यो एउटा पक्ष रहेको छ र जहाँसम्म फ्युचर अफ पावरको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् आज यहाँ हामी जति पनि उपस्थित छौँ हामी वर्तमान हाम्रो भविष्यका सन्तानहरू हाम्रो लागि शक्ति शक्ति भनेको मनी पावर मात्र होइन शक्ति भनेको मसल पावर मात्र होइन शक्ति भनेको
तपाईको क्षमतालाई उजागर गर्दै जाने। त्यसैले तपाईँ हामीमा भएको हाम्रा संस्कारहरू, तपाईमा हामीमा भएका ती राम्रा पक्षलाई लेगासीको रूपमा हाम्रो सन्तानलाई दिन सक्यौँ भने, हाम्रा भावी सन्ततिलाई हामीले सिकाउन सक्यौँ भने, वा त्यसतर्फ दोहोऱ्याउन सक्यौँ भने भोलिको हाम्रो त्यो फ्युचर, भोलिको हाम्रो भविष्य अत्यन्त सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने कुरोमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो आध्यात्मिक चिन्तनलाई हामी व्यवहारिक रूपमा, आध्यात्मिक चिन्तन मात्र सबै कुरो होइन, तर त्यो आध्यात्मिक चिन्तनलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा परिणत गर्नेतर्फ कसरी यसलाई सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ अहम कुरा हो। यसलाई हामीले अलिकति मात्र प्रयास गर्न सक्यौँ भने भोलिको पिँढीलाई, भोलिको सन्ततिलाई हामी ट्रान्सफर गर्दै जान सक्छौँ भन्ने विश्वास आजको दिनभरको बसाइले पनि हामीलाई सिकाएको छ, हामीलाई अनुभूति दिलाएको छ। त्यो दिशातर्फ अग्रसर हुनलाई प्रेरणा पनि मिलेको छ। र आज किन 50-54 कम्पनीका अध्यक्ष भएका जुमा आज यही कुरोलाई अगाडि ल्याउनको लागि हामीसँग उपस्थित भएको छ। बोध हो, आत्मबोध हो, त्यो होइन। हामीमा भएका केही कुरालाई अत्यन्त व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यो व्यवस्थापन समयको हो, त्यो व्यवस्थापन भनेको तनावको हो। ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामी जुन फिल्डमा, जुन क्षेत्रमा, जुन प्रोफेसनमा लागेका छौँ त्यसमा सफलीभूततर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ भन्ने कुरोको एउटा प्रमाणीकरण आज जुमाले हाम्रो अगाडि दिएको छ। एउटा व्यवसाय भएर त्यतिका समय आफ्नो व्यवसायको उन्नतिको लागि खर्च गर्नुपर्ने मान्छे आज तपाईँ हामीसँग यही विषयमा सेयरिङ गर्नको लागि पनि हामीसँग आएका छन्। यसरी यही हो, प्रत्येक मान्छेमा भएको त्यो क्षमतालाई एकअर्कासँग बाँध्दै जान सक्यो भने विश्व मात्र होइन, हाम्रो समाजलाई पनि हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोको हामी इस्ट्याब्लिस गर्नेतर्फ आजको यो फ्युचर अफ पावरको कन्क्लेभले दिएको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा हिजोसम्म केही सिकेको थिइनँ भन्ने कुरो मलाई लागेको छ र भोलिका दिनमा अब बढी सिक्ने अवसर र प्रेरणा प्राप्त भएको छ। So Anthony, I was talking about all the things that I'm very in the learning process. So the strength might come to me that let's work together for the society, for the community, for the future. Thank you. Yes, indeed. Yes, please do make comment. You actually teach doctors how to teach doctors, which seems to me to be quite a difficult job. And you've also, I know, been studying and you've been integrating some of these spiritual ideas into your life and into your work. And I wonder if you might share with us some of those insights that you've got over the years of your integration of all this kind of material into your life. I just want to remind people of something that you said. You posed three spiritual questions people might ask themselves. And the first question was, who am I? And the second question was, to whom do I belong? And the third question is, what do I have to do? You remember that, yes? I remember well. Okay. Now just bear that in mind and put it to one side for a moment. I also work clinically, and I work with people who are chronically ill and their families. And in the doctor-patient relationship, you learn very early on, and I'm sure you've all had the experience too, of power differentials. In other words, in that relationship, when you're treating somebody, the doctor has the power of knowledge, the doctor has the power of authority, and these are very powerful things. 30 years ago, when I started working clinically, these things were, I was very uneasy with them. And I began to wonder about other ways of working. And this was before I actually began to meditate. And part of my work was taking people's pulse. And that
taking of the pulse would last some time, 5 minutes, maybe 6 minutes, maybe 10 minutes, and I was trying to find out what was going on inside their body. I was taking their pulse medically. And in that time, people would choose to talk or not to talk. I might choose to ask questions, but more often than not, I learned to sit quietly and to listen. So I listened to the pulse, but I also listened to the feeling that was coming off the words that they were saying. And in the silence that sometimes happened, I learned to listen not only to their silence, but I learned to listen to my silence. And funny things began to happen when I began to do that. One of the things is that time expanded. Now, I don't know whether you've ever had that experience of time expanding. It's when you're sitting very quietly in silence, and you think that maybe hours have gone by. But then you look at your watch and you see only a few minutes have gone by. This is a very strange experience. And it also works the other way around as well. So I began to learn about another kind of power, not the power of authority and not the power of knowledge, but the power of listening and the power of bearing witness, and also the power of respecting and valuing that moment of sitting there with people. And another kind of power was the one of innocence. That may sound very funny if you're sitting there taking somebody's pulse and you're thinking, what's the power of innocence? The power of innocence is actually letting go of knowledge and authority. Just letting go. And inside that space, over the years, what's happened is those three spiritual questions. When I'm sitting there with patients, I ask myself, who am I? And in that silence, I find out what it is I have to do. That's my story. Thank you. Thank you very much indeed. So, I'm just looking at the clock, and we've run out of time for this portion of the program. So I would like to thank all three of you so very, very much for coming up here and just sharing your experiences so that all our friends here can have a little bit more of an idea of what we have happened today. So let me invite you to go back to your seats and we'll continue. So a big round of applause for our participants. Thank you so much. So now, ladies and gentlemen, earlier this evening we told you that not only did we invite leaders from your region and your community to our dialogue this morning, but we were very fortunate to have quite a number of people from all over the world, and we thought you might like to get the chance to just meet a few of them to say hello. So I'd like to invite onto the stage some of our international guests, and if I could please invite Mr. Barry Uretsky, Ms. Sarah Fitzgerald, Dr. Sarah Eager, Ms. Gudrun Wu, Ms. Rosemary Smith, and Monsieur François Béchet. And if you'd like to come here and stand in a line, and we have someone from Japan. Yes. Can I invite Dr. Mitsui Honda onto the stage as well? So we have, as you can see, quite a few of our friends internationally, and I'm hoping that we can get a microphone. Great. And let's... no, we don't... I mean, you're enjoying this evening's program, aren't you? Yes? How long do you want to stay? Until midnight? Or? Yes. Tomorrow morning. Tomorrow morning? How long do you think I should let them speak for? Probably a minute. Okay. So, we'll just pass the microphone, and the first one
I'd like to introduce you to is another person from the UK, Dr. Sarah Eager. Namaste. Om Shanti. So lovely to see you all. You look really very radiant. You're all smiling. It's very, very nice from up here to see you. I am very honored to be invited to be here in Nepal. You have a lovely country, and especially Pokhara is stunning, as everyone has said. So what I have taken from this morning's dialogue was, it really made me realize that I am a doctor in UK. I work with older people, people who have memory problems, people who have depression, people who have mental disturbance. And so I have to be a very stable person because I have to give other people help and power. And so it made me really remember, where do I get my power from? Because if I don't have power, how can I help other people? And so I felt like if I was a battery, you know, the thing that you put in the radio or anything, how do you recharge a battery? You have to connect it to the source. And so this morning we were remembering that to recharge ourselves, so that the power is really the power. Power is the energy of the soul. And so to recharge the battery of the soul, I have to connect to the source, to the Supreme. And I do that through meditation, through the connection meditation. So the dialogue this morning really reminded me that's how I recharge my battery. Thank you, Sarah. That's great. And now, Sarah Fitzgerald, who comes again from England. I come from Oxford. Sarah comes from Cambridge. My rival. Hello, it's very, very nice to be here today. My background is in design, and since I was a small child, I had a feeling for wanting to bring joy and happiness into the environment. But my background isn't spiritual. I didn't have any religious context. So it took till I was 30 when I discovered meditation, and I had an experience that this happiness and joy that I thought could be made from outside actually comes from inside, and it gave me the beginning of my path of spirituality. And being here, I feel really gives me the feeling of context of spirituality. So I come here to learn, and I'm very inspired by your country. So thank you very much. Great, thank you very much, Sarah. Now I'd like to introduce you to Sister Rosemary, who is currently living, everyone's heard of Manchester United? In Manchester. Thank you, Anthony. I've received a very warm welcome in Nepal. I've never been here before. It's a really stupendous country. And your mountains, my goodness, your mountains. I spent many years abroad, living abroad, and I've always felt like a square peg trying to fit into a round hole. And I never felt very comfortable wherever I was, until finally, when I was in my mid-50s, I found Raja Yoga meditation. And I discovered myself, and I discovered that life is much easier when you really know who you are. My relationships improved, my life improved, everything improved. In fact, a complete transformation, complete. And happiness was found, happiness and contentment through meditation. And now, as Anthony says, I'm up in Manchester helping to coordinate a very new concept in the UK, which is called Inner Space. So thank you for having us. Thank you, Rosemary. And now let's introduce you to Dr. Mitsui Honda, all the way from Japan. Thank you. Namaskar. Very happy to be here and to see the shining face.
and my work is cardiology and heart specialist. So I see the patient before. When I see the patient going to die because of the heart disease, I had in the bottom, I had some fear. Although I didn't recognize, but that fear or sorrow prevented me to connect with the patient. But after learning spirituality, that we are spirit, then my fear disappeared and much easier to connect. No fear, no sorrow, no all these people are going to die and that. So I feel that it makes me gave me benefit to be more efficient, to be with the patient and whatever I can do as a doctor and also human being and also spirit brothers, soul living. It's okay. Well, thank you very much. Great. I'd say that Dr. Honda is a great advertisement for why you should pick up spirituality, because if you do, clearly you will leave all fear and all sorrow behind. Huh? Pretty good. And now, so let me introduce you now to someone who's originally from Germany, our sister Gudrun. Namaste. I had the fortune to arrive here in Nepal a week ago, so I had some time to spend with the Nepali people, with all of you, and to have a good look around and enjoy the mountains. And my experience of all of you is that you are very gentle and beautiful people. I have visited Nepal before once, and that was 28 years ago. So when this opportunity arose to come back to Nepal, I was very happy. And I enjoy every moment, and I'm especially impressed by the mountains. I do like all of you very much, but the mountains are really beautiful. Well, are you telling them that you prefer the mountains to the people? Not really. I have meditated for 28 years, and I do feel I have gained a lot of inner stability, peace, contentment, but I'm still impressed by the mountains. I should let you into a secret that Sister Gudrun is responsible for all the 50 acres of gardens at one of the biggest retreat centers that the Brahma Kumaris have. And so she is an absolutely expert gardener with a great touch for dealing with nature. So thank you, Gudrun. And now, all the way from France, Monsieur François Béchet. Namaste. Of course, I'm really happy to be here, and I'm quite close to Gudrun because I came here 40 years ago, and I fell in love with your mountains. And also, I received so much from the Nepalese people when I was walking the trekking, and so I feel I have to contribute today. And actually, it reminds me when I went to the trekking to the Everest, you know, the Kalapata, over there. And it's so powerful over there. And I think it's the first time in my life that I was quite sure God exists. It's extremely powerful. So there was a big shift in my life. So you see, Nepal brought me a lot. It even brought me even closer to God, the Supreme. So I would say, Nepal, Pokhara, Botacha. And so finally, Mr. Barylewski, all the way from Scotland. Namaste. I don't know whether it's by arrangement or by chance, but there's three of us here now. Gudrun, Francois and myself who are impressed by mountains. I've never been to Nepal before, but I've been waiting 50 years to arrive here. And there's one certain mountain, and it's rather famous, I think, just behind here. I'm sure you all know, the Annapurna mountain, that I have read and I
have many, many books at home. I try to give them away, but my sons and my family still keep buying them for me. So I'm very impressed. I always had an urge, a desire for power. Now, it sounds rather peculiar, that, but as a teenager, I joined the Royal Air Force, the UK Royal Air Force, and did rather well. And I know you have the famous Gurkhas here, who are very strong and very powerful, and the best fighters in the world. And I did very, very well through that. I was an engineer and then a teacher there in the engineering field. But when my time came to finish, I went into business, and I was trained very well in the existing systems, or at that time in the 1980s, of business, and again did very, very well. But there was a little bit of an impact, and that was that in the process I hurt a lot of people. My family wasn't too happy, and my health began to suffer. And then one day somebody introduced me to meditation, quite by chance. And it was with this organization. And I'm not trying to advertise the Brahma Kumaris, but it gave me an insight that all the time I've been trying to change people out there, and what this form of meditation was, I have to change. And as soon as I started to do that, when I changed, everything else began to fall into place. And people began to cooperate with me, and the success we had was even greater. Thank Great. You. Thank you very much, Gary. So, our international guest, thank you very much. Back to your seats. So, now, ladies and gentlemen, this evening we've been talking all about the dialogue that we had. I've been introducing to all these people who have been clearly very positively and powerfully affected by their lives bringing spirituality into practicality. And so now I would like to invite Mr. Nizar Juma back onto the stage to share with you for just about 15-20 minutes some secrets, some practical pointers into how to bring spirituality into your lives, not tomorrow, but today. So please, with a warm welcome and a round of applause again for Mr. Nizar Juma. Thank you. आपको याद है ना, आपने वादा किया है। तो आज हम ये शुरू करेंगे। आज हम हमारी लाइफ को हमारे कंट्रोल में लाएंगे। हमारी लाइफ में इनको हम कहते हैं हम इनका मास्टर हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको हम सेल्फ मास्टरी कहते हैं। तो आज से हम न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाएंगे। आज 8 मार्च है ना, लेकिन हम ट्रीट करेंगे ये 1 जनवरी। अभी हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे कि हम क्या, ये हम शुरू करें उनकी पहले मैं आपको 3 चीज बता दूं। मेरा 10 पॉइंट है, उनकी पहले 3 चीज बता दूं। पर जो भी दुनिया में कुछ भी है वो साइकिल में रन करता है। ये एक कोर्स में इधर रख देना है। बर्थ, डेथ, सनराइज, सनसेट, डे, नाइट, कोई भी चीज दुनिया में है वो सिक्लिकल है। ओके, रिलेशनशिप भी होता है, वो भी सिक्लिकल है। आज आपने नया रिलेशन शुरू किया, इनको जो आप नहीं चाहिए रिलेशनशिप में नहीं लाएंगे तो ये रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। हम बिजनेस में भी इनको यूज करते हैं। हम इनको कहते हैं एस्कर। जो नया प्रोडक्ट जब लाते हैं उनको एडवर्टाइज करते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाता है, फिर इसमें जो हम इनोवेशन नईता नहीं लाते हैं तो ये प्रोडक्ट साइकिल भी नीचे चल जाएगी, ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी। ऐसा कंपनीज भी इनोवेशन नहीं लाते हैं तो कंपनीज भी खत्म हो जाते हैं। आज राले बाइसिकल्स कहाँ हैं?
ऐसी बहुत सी कंपनियां, अभी देखो कोडाक भी खत्म हो गया क्योंकि वो इनोवेशन नहीं किया। जब इलेक्ट्रॉनिक्स आया उसने ये नीला, तो अभी वो भी खत्म। तो ऐसा सारी चीज दुनिया में सिक्लिकल है और उसमें इनोवेशन लाना बहुत जरूरी है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इनोवेशन लाना है, नहीं तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कहेंगे आप बोरिंग हो गया, तो बोरिंग नहीं रहना है ना, कॉन्स्टेंटली नई लानी है लाइफ। सेकंड, दुनिया में सब चीज लॉजिकल होती है, कोई मैजिक नहीं है। कोई भी आपको बोले कि ये मैजिक से होता है वो रबिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज का कुछ ना कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो हमें ढूंढना है। कोई भी चीज ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेना। कोई हमें स्टोरी करे कि ये ओशन खुल गया, हम सब पास हो गए, फिर ओशन बंद हो गया, ये सब रबिश, ये स्टोरी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज में लॉजिक ढूंढो कि इनका रियल एक्सप्लेनेशन क्या है। थर्ड, एवरीथिंग इज जस्ट, कोई भी इनजस्ट नहीं है। हम कहते हैं मेरे ऊपर ये जुल्म हुआ, जुल्म नहीं होता है। एवरीथिंग जस्टिस। ये आप स्कूल में आपको याद होएगा कि न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल है, everything has a direct and opposite reaction. Every action has a direct and opposite reaction. ऐसा कुछ है ना, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन। तो मैं कोई भी चीज करूं, उनका मेरे ऊपर उनका रिएक्शन आएगा, कोई भी चीज। ये हम इनको कहते हैं ऑल्सो कार्मिक काम, फिलोसॉफी ऑफ कर्मा। आपने सुना है, इधर तो इजी है, सबको मालूम है कर्मा क्या होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। आज जो भी मेरी लाइफ है वो रिजल्ट है मेरा पास्ट कर्मा। मैं जो भी किया है वो अभी मेरे सामने आ रहा है, और जो भी मैं अब कर रहा हूं वो मेरे सामने आएगा, ये बेशक बात है। इसलिए मेरी अभी जो लाइफ है वो मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये मेरा ही कर्मा है। मेरे बच्चे मेरे सामने आए, उनको मैं अबैंडन नहीं कर सकता हूं, ये मुझे एक्सेप्ट करना है। तो मैं किसको ब्लेम करूं? किसको ब्लेम करूं? हम भगवान को ब्लेम करते हैं, भगवान ये मेरे ऊपर क्यों किया, लेकिन हम भूल जाते हैं उसने नहीं किया। हमारा कर्मा हमारे सामने आ रहा है, तो किसको ब्लेम नहीं करना है। आपके वजह से ये हो, आपकी वजह से ये नहीं है, मेरा खुद का एक्शन मेरे सामने आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट। तो अभी हमारा एक्शन प्लान है। मैंने जो प्रॉमिस किया आपको 10 पॉइंट मैं आपके सामने बताऊं, फिर आपको डिसाइड करना है इसमें से आपको सब लेना है कि कोई लेना। 1, मुझे मेरे विचारों को कंट्रोल करना है। बहुत चीजें विचारों से होती है। विचारों में भी स्टेजेस होता है। बॉटम मेरा विचार होता है जो हम इनको विशेष कहते हैं, बहुत खराब हो, ये मैं कर लूंगा, इनको ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब इनको विशेष सोच कहते हैं, विशेष। उसके बाद नेगेटिव सोच, ये हुआ है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, ओ भगवान वो होएगा। ये हुआ नहीं है, ये सिर्फ इधर हुआ है, हमने ये बना लिया है। 99% जो भी हमारा ये नेगेटिव सोच होता है वो कभी रियलिटी नहीं होता, लेकिन इससे वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं। फिर हमें मालूम नहीं है डिप्रेस क्यों है, लेकिन ये नेगेटिव सोच प्रोसेस से हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो नेगेटिव नेक्स्ट। उसके बाद वेस्ट सोच, उसका भी कोई रीजन नहीं है। किसी ने फोन करके बताया
ये आपके बारे में ये बता रहा, फिर शुरू हो गया कांस्टेंट मशीन चलने का, ये मैं इनको ये कर लूंगा, वो ये इतना बड़ा बना दे और बनाते रहेंगे। हमारा सारा विचारों आप देखो कि कितना विचारों विशेष है या नेगेटिव है या टोटल वेस्ट है, नो रीजन फॉर हम ये सोचते हैं। तो हमारा जो ये ब्रेन है ना, वो एक मशीन है, वो कॉन्स्टेंटली सोच रहता है। हमको उनको कंट्रोल में लाना है, हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। और ये वेस्ट के बाद हम न्यूट्रल और उसके बाद पॉजिटिव। तो हमको ऑल द टाइम देखना है, हमारा विचार को कंट्रोल करना है। हम इनको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। माना हमारा विचारों का ट्रैफिक का कंट्रोल करना, ये हमको सोचना है, सारे दिन सोचना है, क्या हम सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और इनको चेंज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक आपको करना है। इजी है, सिंपल, सिर्फ हमें ये सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, सोच के बारे में सोचना। ओके, नेक्स्ट, गुस्सा को बंद करना है। कोई भी चीज आप करते हो, कभी भी गुस्से में जो करते हो उनका रिजल्ट नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव नहीं हो, कभी नहीं हो। आप सोचो। दूसरा बात यह है कि हम जो क्वाइटली ऐसा कोई भी चीज कर रहे हैं तो हमारा माइंड जो है मशीन, ये 1 मिनट में 10 से 15 सोच कर विचार, 10 से 15 एवरी मिनट। जब हम गुस्से में होते हैं तो ये नंबर ऑफ थॉट चढ़ता रहता है, उसमें 30, 40, 50, 60 हो जाता है। जितना भी ज्यादा हम सोचते हैं सोच को, इतना काम हमारा इंटेलेक्ट काम करता है। इंटेलेक्ट माना गुस्सा। तो जब हम इतना गुस्सा करते हैं तो आप सोचो कि हमारा इंटेलेक्ट तो बाहर चला जाता है, हमारी वोकाबुलरी भी इनके साथ बाहर चली जाती है, इसलिए हम स्वेलिंग शुरू कर देता है, क्योंकि वोकाबुलरी चली गई, सेंस ऑफ लॉजिक चला गया। कोई आपको बोले भाई साहब आप सुनो, नहीं मैं ही सच्चा हूं। तो गुस्सा करना या दारू पीना सेम, इनका रिजल्ट सेम। स्ट्रेस में भी रहना, उनका भी रिजल्ट सेम है, क्योंकि 40, 50, 60, 70 थॉट्स पर मिनट हो। इंटेलेक्ट अभी काम नहीं करती। आपको मालूम है ओल्ड डेज में वो बंदर को पकड़ना हो ना, तो वो लोग एक बास्केट में रोप बनाना डाल देते, फिर उनको नीचे स्क्रू कर देते, इतना होल रखते। वो बंदर देखता है ये बनाना, उसमें हाथ डालता है, बनाना निकालता है, लेकिन अभी ये बनाना इधर है, वो होल में से निकल नहीं रही। उनको अभी पैनिक हो रहा है, स्ट्रेस, विचार नहीं आता है, इंटेलेक्ट चली गई, तो ये ऐसा करा। इनको ये इंटेलेक्ट में नहीं आता है कि ये मैं छोड़ दूं तो मैं छूट जाऊं, छोड़ता नहीं, फिर उनको आके पकड़ लेते हैं। ये इंटेलेक्ट का एग्जाम्पल है कि इंटेलेक्ट जब काम नहीं करता है तब हम पैनिक होते और सब कुछ बिगाड़ते। इसलिए बहुत सा कंपनीज इनका सीईओ को खुद चलाने के मीटिंग में नहीं जाते, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उनका इंटेलेक्ट काम नहीं करता इंपॉर्टेंट मीटिंग में। तो ये आपको ख्याल करना है। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, सच है कि जितना कम आप सोचो इतना आपका इंटेलेक्ट मोर पावर, जास्ती पावर। आपको 10-15 सोच पर मिनट में से आपको इनको 8, 4, 2, 1। जब आप एक सोच पर फोकस करेंगे तब आपका इंटेलेक्ट
बहुत पावरफुल है। और ये जो सारा मेडिटेशन की भी हम बात करें, ये एक सोच की बात। कोई भी चीज आप एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं। हम सबके पास इनफ टाइम नहीं है, सबको टाइम शॉर्टेज है। तो बहुत से लोग कहते हैं ये हम 4-5 चीज एक साथ हम इकट्ठे कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग। हमारी बहनों लोग बहुत कहते हैं हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप मदद नहीं कर सकते। लेकिन जो हम 5 चीजें एक साथ करते हैं तो हम सारा 5 ही चीज बदलते। एक को कम टाइम दो, लेकिन एक के बाद दूसरे के बाद दूसरा अच्छा काम करना है। कोई भी चीज आप करो, इनमें आप फुल फोकस वही काम करो, कम का टाइम दो लेकिन वही काम, एक ही काम, वन टाइम। तो आपकी पावरफुल। तो ये हम एंगर की बात कर रहे हैं। तो एंगर में सब कुछ नेगेटिव। आप जब किसी के ऊपर गुस्सा से बात करते हो तो उनका भी इंटेलेक्ट स्विच ऑफ है, क्योंकि वो कहता है कि ये बस रहा है कुत्ता। सेम इफेक्ट है उनके ऊपर, और कोई भी नहीं है। ये मुझे मालूम है भी, ये एंगर मेरा एक वो वेपन था। मुझे ऐसा था कि एंगर से हम बताते हैं उनको कि हम कितना जोड़ा हुआ, लेकिन वो बताते हम कितना वीक। एंगर बताने से वीकनेस बात है, स्ट्रेंथ नहीं आता। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मेडिटेट। आपको मेडिटेट करना वो सीखना है। मेडिटेट करने के लिए सीखना वो डिफिकल्ट नहीं है, वो सहज है। आपको अडॉप्ट करना है, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हैं कि जो सारी लाइफ आप कर सकते हो। ऐसा कोई कहते हैं वो ब्रिज जो खेलते हैं कि सारी लाइफ हम ब्रिज खेल सकते हैं, जो भी आपकी उम्र है। ऐसा कोई कहते हैं गोल्फ खेल सके सारी लाइफ। मेडिटेशन एक चीज है आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहेगी। एक दफा कर लिया, सीख लिया, ये कॉन्स्टेंटली आपको प्रैक्टिस करेंगे और ये आपको पावरफुल बनाएगा, शक्तिवान बनाएगा। फ्रॉम विदिन आपको सब लॉजिक मालूम हो, आप पावरफुल बनेंगे। कोई भी चीज आपके सामने आएगी, आपको इनका सामना करने की ताकत है। ये मेडिटेशन आपको, बहुत से लोग कहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है ना। टाइम किधर से निकाले एवरीडे मेडिटेशन करना? आप 6:30 बजे उठते हो, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठते हो, 5:30 बजे उठ जाओ, आधा घंटा मिल गया मेडिटेशन, मिल गया ना। आपकी जो विश है तो आप टाइम बनाए, विश नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ आप ढूंढेंगे, इस वजह से वो वजह से। लेकिन ये आप दूसरा कोई भी नहीं ढूंढो, कोई भी नहीं करो, ये करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये आपने बेस्ट डिसीजन आपकी लाइफ का लिया। ये नेक्स्ट, किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि जैसे हमने पहले बोला, जो भी आप किसी के सामने करेंगे आपके सामने वापस आना ही है। ये आना ही है, इसमें कोई बेशक बात नहीं है। इसलिए किसी को दुख नहीं देना। हम भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान मैंने ये कर लिया, किसी को दुख दे दिया, किसी की चीज ले लिया, अभी मुझे माफ कर दो। वो कर देगा? वो नहीं कर सकता है। क्यों? मैं आपको बताऊं कि मेरा 2 लड़का है, एक ने दूसरे के पास छीन लिया और फिर मेरे पास आया, मैंने ये छीन लिया है, मुझे बोलो कि ये ठीक है। मैं जो ये बोल दूं तो वो दूसरा बोलेगा कि आप कैसे बाप,
कि ऐसा इनजस्टिस किया आपने, तो भगवान भी हमारा बाप है, क्या वो एक दूसरे को दुख दे तो वो एक्सेप्ट कर सकता है? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आपको जो ये दुख दूर करना है तो आप किसी के पास जाओ जिनको दुख दिया और उनको बोलो आपको, और कोई आपको माफ नहीं कर सकेगा। ये आपको सेटल करना ही है। दूसरे लोग मुझे कहते हैं कि हमने देखा बहुत लोग सबको दुख देते हैं, सबका माल ले लेते हैं, ये किया वो किया, और फिर वो तो बहुत पैसा बना के मर गया। तो इसमें जस्टिस किधर आई? फिर हम देखते हैं कि वो हमारे अफ्रीका में बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता, जिनका डिजीज है, जिनका कुछ भी उनको पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें से वो निकले, हम कहते हैं कि इस ये मासूम बच्चा ने क्या किया, इनको इतना दुख दिया। लेकिन हम दोनों को जोड़ते नहीं हैं। वो जो चला गया और वो इतना, क्योंकि री इनकारनेशन में इधर तो हम सब बिलीव करते हैं कि हम कौन हैं, आत्मा है। तो आत्मा एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी लेता है। जो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आत्मा वूम्ब में आता है, जब ये किकिंग शुरू होता है ना, तब वो आत्मा घुस गया। और जब ये आत्मा बॉडी को छोड़ते हैं तो हमको मालूम है, क्योंकि हम कहते हैं वो बॉडी छोड़ के चला गया, इस डेथ, मर गया। तो ये आत्मा एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा इज इटर्नल। तो इनका जो भी देने लेने का संबंध है वो परमानेंट है। अच्छा करो तो अच्छा रिटर्न हो, बुरा करो तो बुरा रिटर्न। तो ये ख्याल में रखना, पास्ट का एक्सेप्ट कर लेना, फ्यूचर का अभी से चेंज करना है कि मेरा फ्यूचर अच्छा होए तो मेरा एक्शन कैसा होना चाहिए कि मैं किसी को धूप ना दूं, किसी का चीज लूं नहीं, किसी को हैप्पीनेस दूं और किसी का छीन के ले लूं। ओके, नेक्स्ट, हम किसी को दुख नहीं दे, लेकिन किसी का दुख लेना भी नहीं है। वो भी आपको ये बोल बांधना है कि हम आपको दुख नहीं देंगे, लेकिन आपका दुख नहीं, आप सुनो भी से, शेयर करो, कोई बात नहीं, बेशक करो, लेकिन आपको डिटैच रहना है, लविंग रहना है, लेकिन डिटैच। हमको और किसी का दुख लेने का कोई नहीं जरूरत। नेक्स्ट, अभी हम समझ गए कि सारा एक्शन जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा एक्शन हमारे सामने आ रहा है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी को ब्लेम करना वो हम बहुत इजी मानते हैं। कुछ हो गया, अभी मैं पहले सोच रहा हूं अभी किसको ब्लेम करूं, मेरा तो फॉल्ट है ही कभी नहीं हो सकता, किसी का हो। किसी को ब्लेम करके मुझे अच्छा लगता है, अभी मैंने बोल दिया इनका इनका इनका, ये सोचो किसी का भी नहीं है, मेरा है। मुझे अडॉप्ट करना है, मुझे अच्छी तरह से अडॉप्ट करना है, अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा ही है तो मैं क्यों उनको बुरी तरह से अडॉप्ट करूंगा और सबको ब्लेम करूंगा, उसने किया, ये भगवान ने किया, फाइनली उसने नहीं किया, वो क्यों करेगा। नेक्स्ट, आपके साथ हर रोज आपको एक मीटिंग शेड्यूल करनी है आपके साथ। ये भी मामूली बात नहीं है, क्योंकि आज हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हम खुद को सोचने के लिए टाइम नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किन के बारे में सोच रहे हैं।
क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं जो किसी के बारे में बुरा सोचता हूं तो ये मैसेज उनको मिल जाता है। किसी के बारे में मैं अच्छा सोचता हूं तो वो भी मैसेज मिलता है। आप ट्राई करो, किसी के साथ जो आपको अनबनाव है उनके साथ आपको कनेक्शन सुधारना, बेहतर करना, तो आप इनके बारे में सिर्फ आधा मिनट, 1 मिनट सोचो, उनको इन्वोक करो आपके सामने और उनका अच्छा वाइब्रेशन, लव, पीस, जो आप देखना नेक्स्ट टाइम आप उनको मिलेंगे, 1 वीक 2 वीक्स में ये रिलेशनशिप चेंज हो जाए। ऑपोजिट भी ट्रू, तो अच्छा भेजेंगे तो ऐसा होएगा, बुरा भेजेंगे तो भी इनको मिल जाएंगे, ये वर्ल्ड बंद शुरू हो जाएगा। तो आपको सोचना है मैं क्या सोच रहा हूं, किसके बारे में क्या सोच रहा हूं, और बुरा नहीं सोचना, मैं आपको ही कह पाया। तो ये मीटिंग मेरे साथ करने में बहुत फायदा है, क्योंकि मुझे ये सब सोचना है, इनमें टाइम नहीं लगता। मैं क्या कर रहा हूं, किसको क्या कह रहा हूं, मेरा एक्शंस क्या है, मैं कैसी प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये सब आपको दिन में एक दफा सोचना। सारे दिन में जो नहीं कर सको तो फिर शाम को करो, रात को सोने के पहले करो, मेरा आज दिन में मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा, क्या मैं करेक्ट करूंगा, कल से क्या करूं, तो आपको नींद भी अच्छी आए, और सुबह आपको अर्ली आप उठेंगे तो उसमें भी आपको फायदा लगेगा। ये कोशिश करो, क्योंकि मेडिटेशन में हमको सुबह कर देते। क्यों सुबह करते हैं? क्योंकि हम लोग सब वाइब्रेशंस फैलाते हैं, हम सारे वाइब्रेशंस एटमॉस्फेयर में डालते हैं। तो आपको मालूम है, किसी रूम में आप जाके कह सकते हो कि मैं ये रूम में गया, वाइब्रेशन इतना बुरा था, कोई कुछ कह नहीं रहा था लेकिन वाइब्रेशन बुरा था। और किसी जगह में हम जाते हैं, कोई टेंपल में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हम वाइब्रेशन अच्छा लगता है, तो ये वाइब्रेशन हम ही डालते हैं। तो आजकल सारे दिन में इतना लोग वाइब्रेशन सभी नेगेटिव डालते हैं एटमॉस्फेयर में कि वो हमें इफेक्ट करता है। तो हम सुबह 4 बजे करते हैं मेडिटेशन। क्यों? कि वो लोग जो बाहर सब किए हैं, पार्टीज में जिधर भी, वो लोग सो गए तब तक, और जो लोग अर्ली उठते हैं, जो काम करने की जाने, वो अभी तक नहीं उठा 5 बजे। तो इसलिए हम 4 से 5 ये टाइम चूज करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं जरूरी है कि वही टाइम, हम कोई भी दिन का टाइम चूज कर लो, कोई भी, कभी भी, किधर भी, या ऑफिस में हो, बाथरूम में हो, अब किधर भी हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और ये सिंपल जो सिस्टम है वो आपको आज बताएंगे, लेकिन डिटेल में जो जानना जरूरी है। आप किधर भी जाओ, आप ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ तो वो भी ठीक है, वो आपको बताएगा, लेकिन मेडिटेशन कोई भी आपको बता सकता। कैसा करना है? फोकस करना है कि मैं आत्मा हूं, मुझे परम आत्मा के साथ कनेक्शन करना। ये सिंपल है मेडिटेशन। कोई आपको बोले ये कॉम्प्लिकेटेड, ये करना है, वो करो, ये आपकी टंग ऊपर डालो, ऐसा ब्रीथ करो, ऐसा बैठो, ये सब बकवास है। सिंपल बात है, आप सिर्फ कंफर्टेबली बैठ जाओ, फिर क्या करना है ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आपकी एनर्जी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी काम करते हो, 1.5 से 2 घंटा के जास्ती आप कुछ भी करते हो एक लोट में, इसके बाद आपका फोकस नहीं है। आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लेना है, पानी पियो, इधर थोड़ा वॉक करो और वापस आके रिज्यूम करो, आप रिफ्रेश हो जाएगा इंटेलेक्ट में और बॉडी दोनों। ये इम्पोर्टेंट है, स्मॉल है, छोटी चीज है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आप याद रखो।
कि सारे दिन में 2 घंटा के बाद 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी। नेक्स्ट, दिन में एक दफा कुछ ना कुछ सेल्फलेस करना है, कुछ ना कुछ एक दिन में एक दफा। हो सकता है, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिन में एक कोई भी चीज विदाउट एनी रीजन, ये नहीं कि वो मेरा उनके ऊपर एक कर गया वो भी मेरा करेगा, ऐसा नहीं। फॉर नो रीजन, नो फाइनेंशियल गेन, नो अदर गेन, जस्ट सर्विस। कोई भी रीजन के बिना आपको एक चीज, किसी के लिए एक चीज करना है एवरी डे। आपकी लाइफ में ये जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका सारा प्रोसेस बदलेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा। क्योंकि ये सब हम क्यों कर रहे हैं कि हमारा हैप्पीनेस बढ़े, हमारा पीस बढ़े, हमारा लव बढ़े। ये हम इसलिए हम कर रहे हैं और कोई भी रीजन नहीं। आपके पास जितना भी पैसा है कि नहीं है, ये चीज पैसे से नहीं आती है और कोई आपको नहीं दे सकेगा, नहीं दे सकेगा। जो भी देगा, लव भी देगा, कुछ भी देगा, इसका सेल्फिश रीजन है। कोई विदाउट सेल्फिश रीजन कुछ भी नहीं देगा। और ये मान लो, ये एक फैक्ट है, एक्सपेक्ट नहीं करो किसी के पास, लेकिन आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं? आपको थोड़ा इतना सेल्फिश बनना है, इतना सेल्फिश बनना है। क्यों? कि मुझे सोचना है मेरे बारे में। क्योंकि आपकी लाइफ जब बेटर होगी तो आपकी फैमिली की लाइफ बेटर होगी और आपका जो भी आराम है सबकी लाइफ भी बेटर होगी आपके वजह। तो इसलिए ये सेल्फिश बनना भी आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंडेंस अभी हो गया है कि हमें सोचना है कि कितना डिपेंडेंसी हो गया है कि हम इनको थोड़ा कम कर सकते हैं। जो अभी का जनरेशन, मेरा ग्रैंडसन है 2 साल का नहीं हुआ है, वो आईपैड लेके बैठ जाता है और मुझे डाउनलोड जो नहीं आते उनको आते। इसकी माँ अभी उनको कंट्रोल कर रही है कि दिन में कितने टाइम उनको ये अलाउ करेगी, क्योंकि बहुत बढ़िया। क्या हम एक दिन मोबाइल फोन के बिना चला सकते हैं? चलो आधा दिन, कम से कम 2 घंटा तो चला सकते हैं। ये कोशिश करो। ओवर डिपेंडेंस हो गया और इसके बिना हम लॉस्ट हो जाएंगे। ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, लेकिन ये एवरीडे की लाइफ है। वो में सोचना कि ये सब चीज हम कंबाइन करते हैं। आपको मैंने 10 पॉइंट दिया है, इसमें से 7 पॉइंट स्पिरिचुअल है, 3 पॉइंट नहीं है। लेकिन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, इसके लिए भी कुछ करना। तो ये सब इकट्ठा करके हमें कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना है आज, अभी। ये नहीं कहना मैं कल सोचूंगा तो ये खत्म हो गया, कल नहीं होगा। आपको आज अभी सोचना है। ये 10 पॉइंट आपको इस बारे में सोच के इसमें से डिसाइड करना है, मैं आज से क्या अडॉप्ट करूंगा और करूंगी आज से। ओके? और ये फर्म डिसीजन ले लो, आपकी लाइफ इंप्रूव होएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। ना होए
तो मेरी ईमेल ले लेना, ये बहन की बात, ये सब बहन की बात है कि मुझे ईमेल करना कि आप बकवास बता के चलेंगे। मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, इसमें से जितनी भी चीज आप अडॉप्ट करेंगे वो आपके बेनिफिट में है, कोई भी आपको डिसबेनिफिट नहीं होगा। ओके, डिसाइड कर लो। किया? पक्का? वेरी गुड, थैंक यू सर। Thank you, Nizar. Now you have the 10 points, and you only need to pick 2 or 3 of them. Don't need to all of them. So now, gentlemen, it is my great pleasure and privilege to introduce to you our guest for this evening, and this is Mr. Bishwamba Prasad Shrestha, who is the acting Chief Judge of the Appellate Court here in Pokhara. So now I would like you, sir, to come onto the stage. We're very privileged and proud to have you here to make your address. आज ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय पोखराको अर्गनाइजेसनमा हाम्रा विदेशबाट आउनुभएका मित्रहरूसहित लिएर हामी सम्पूर्ण यहाँ पोखरावासीलाई यस किसिमको एउटा असाध्यै जीवन उपयोगी कार्यक्रम गर्नुभयो। त्यसको लागि आई थ्याङ्क होल इन्टायर टिम अफ जुमा। We get you share some experience, doctors and others. Sure, we are fruitful from your experience. Thank you very much for them. हामीलाई थाहा नभएको विषय होइन, हामीभित्र आत्मा छ। Everybody knows inside us there is a soul. तर त्यो आत्मालाई कसरी परिचालन गर्ने, त्यो आत्मालाई कसरी साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, त्यो आत्मालाई कसरी इम्पावर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई थाहा छैन। त्यो थाहा पाउनको लागि, जानकारी दिनको लागि आजको यो प्रोग्रामले बिहानदेखि म आएको छु। निश्चय नै यसले मलाई धेरै नै चाहिँ मद्दत दिएको छ। यसले मेरो हरेक कार्यक्रममा, हरेक क्रियाकलापमा निश्चय नै यसले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्दछ। और के को लागि भन्दाखेरि हामी असल नागरिक, असल मानव भएर बाँच्नको लागि, बाँच्नु त सबैजना बाँच्छन्, जिउँछन्, मर्छन्, तर एउटा असल नागरिक भएर बस्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्ने कुरा सिकाउने काम यो ब्रह्मकुमारीले एट्याच गर्यो, डाइरेक्ट हामीलाई गर्यो। त्यसैले यो ब्रह्मकुमारीले हामीलाई एउटा मार्ग निर्देशन गर्ने काम गरेको छ, जुन एउटा एट्याचमेन्ट गर्ने काम गरेको छ। धन्यवाद छ उहाँहरूलाई। र यो बुझ्न गाह्रो छ, यो म पनि न्यू कमर हो, मलाई पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ब्रह्मकुमारी प्रोग्राममा गएको छैन, मलाई थाहा छैन। यो बुझ्न बडा गाह्रो छ। के हो आत्मा भनेको के हो र शरीर भनेको के हो? हामी एउटा प्लेन अघि लेभलमा छौँ, हामीलाई त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो छ। तर आज धेरै कुराहरू हामीले सिक्यौँ। यसरी छुट्याएर काम गर्दाखेरि हामी बिचमा भएका, हाम्रो भित्र रहेको आत्मामा पनि शक्ति आउँदो रहेछ र हामीलाई चाहिँ असल काम गर्न प्रेरित गर्दो रहेछ र हामी असल नागरिक हुन रहेछौँ, असल काम गर्ने रहेछौँ र अरूको लागि एउटा उदाहरणीय बन्न सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरा हामी भित्रै रहेछ। हामी त बाहिर खोज्नु पर्ने रहेको, हामी भित्र भएको कुरा हामी देखेका छैनौँ, न हामी देख्छौँ, न हामी त्यसलाई सुन्न सक्छौँ, तर फिलिङ गर्नु पर्दा रहेछ। फिलिङबाट नै चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इम्पावर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आज हामी सिक्यौँ। म आफ्नो अलि हाम्रो जुमाले जुन 10 पोइन्ट्स दिनुभएको छ, हामी सबै त्यो 10 पोइन्ट्समा मध्ये हामीले केही न केही रूपमा सबैले चाहिँ गरिरहेका छौँ जीवनमा, त्यो नगरेको होइन। सबैले हामीले यो गरेकै छौँ, तर उहाँले एउटा सिस्टमेटिक रूपमा एउटा चाहिँ मिलाएर चाहिँ गर्यो। हामीलाई थाहा नभए विषय पनि होइन, जुन तपाईँले आएर पाउनुभयो, हामीलाई थाहा नभएको विषय होइन। हामीलाई थाहा छ
तर एउटा सिस्टमबाट कसरी लैजाने कस्तो हो भन्ने कुरा यो चिजमा गएर सिकाउनु भयो यो चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो र मलाई चाहिँ यसरी चिफ गेस्ट बनाएर बोलाउनु भयो पोखराको चाहिँ प्रमुख मान्छे थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु म आफै पनि इन्लाइटेड भएको छु मैले भने म यो फर्स्ट कार्यक्रम हो थ्याङ्क यू भेरी मच Thanks for those kind words. Do stay on the stage because I'm going to ask Surendra Didi to come up onto the stage to present you with a godly gift from the Brahma Kumaris. Surendra Didi, do come up. A book, yes, this is a beautiful book of all the knowledge of the Brahma Kumaris. Thank you so much, sir. Thank you, sister. So now, all this talk of spirituality, all this talk of power, and all the way through this evening's program, we have been hearing this theme of meditate, meditate, meditate. And so now, we would like to give you the opportunity to experiment with meditation. And so I would like to ask you all to now sit comfortably, with a straight back. We don't want you going to sleep. You know, the kind of meditation of the Brahma Kumaris is with the eyes open. And so I invite you this time to keep your eyes open, and in order to give you something to look at, we will play an image on the screen, and I would ask you now to sit back, relax, remain alert with your eyes open and enjoy the next 5 minutes for meditation. ओम शांति। आज की सुंदर वेला में हम सभी आत्माएं अपने उस परम पिता परमात्मा से असीम प्यार का अनुभव करने चले। कुछ पलों के लिए सब कुछ भूलकर महसूस करें कि मस्तक के बीचों बीच एक चमकता हुआ सितारा, जो मेरा असली स्वरूप है, आज मैं आत्मा अपने उस स्वरूप को देख रही हूँ। मेरे पिता परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, निराकार परमात्मा की किरणों रूपी बाहों में हम सब समा गए हैं। असीम प्यार, बेहद शांति। इतने वर्षों से बिछड़ी हुई आत्माओं को आज परम पिता परमात्मा का असीम प्यार मिल रहा है, शांति मिल रही है, बेहद शांत। परमात्मा की किरणों रूपी बाहों में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।
आजको यस द फ्युचर अफ पावर कार्यक्रममा उपस्थित हुने आजका प्रमुख अतिथि माननीय न्यायाधीशज्यू र यसै कार्यक्रमको निम्ति पाल्नुहुने ब्रदर इजाजुमाज्यू एन्थोनी ब्रदर्स र साथमा उहाँको सम्पूर्ण टिम र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता हुने मेरा सम्पूर्ण आत्मीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रमको सफलताको लागि म परमपिता परमात्मा जसको अहिले हामी सबैले स्मरण गर्नुभयो र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।